Hello students, today I welcome you all on behalf of Rasa International School. Today we will study chapter number 12 of Science class 8th Friction. It is on your book page number 147. Now, what is friction? So, here a boy falls down when he steps on a banana peel. तो एक बच्चा यहाँ पे गिर गया है जब उसने एक केले के छिलके के ऊपर पैर रखा. So it is been happen. Now you can understand with the help of the term friction. Okay, so we will start now. You might have seen a driver of a car or a truck slowing down the vehicle at the traffic signal. You too slow down your bicycle whenever needed by applying brakes. Have you ever thought why a vehicle slows down when the brakes are applied? Not only vehicles, any object moving over the surface of another object slows down when no external force is applied on it. तो हम देखते हैं कि कोई भी गाड़ी जो कोई भी ड्राइवर चला रहा है वो कोई भी ट्रैफिक सिग्नल आता है तो उस पर ब्रेक लगा के गाड़ी को रोकता है और गाड़ी धीरे हो जाती है और फाइनली रुक जाती है. सिमिलरली हम लोग अपनी जो साइकिल चलाते हैं अगर हम उसमें ब्रेक लगाते हैं तो वो रुक जाती है. इसके अलावा कोई भी सब्सटेंस या कोई भी ऑब्जेक्ट जो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव कर रहा होता है वो धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होती जाती है अगर उस पर बाहर से कोई भी फोर्स ना लगाई जाए. तो ऐसा क्यों होता है? सो फाइनली इट स्टॉप्स. हैव यू नॉट सीन अ मूविंग बॉल ऑन अ ग्राउंड स्टॉपिंग आफ्टर सम टाइम? When you see that the ball is stopped means when a ball is being thrown or moving along the ground it finally come to rest. Why it come to rest? There we will discuss that the friction force is there. Why do we slip when we step on a banana peel as been shown in the figure 12.1? Why it is difficult to walk on a smooth and wet floor? तो गीले और चिकने फर्श के ऊपर जो स्मूथ और वेट surface we are able to face problem while walking. Why it so happen? So this is because of the friction. Okay, so now understand how it has been there. Gently push a book on a table as shown in the figure 12.2. Okay, so you observe that it stop after moving some distance. Repeat this activity pushing the book from the opposite direction. Does the book stop this time too? Yes, it will. Can you think of an explanation? Can we say that the force must be acting on the book opposite to the motion or opposing the motion? मीन्स कि जब हम बुक को किसी एक डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं तो बुक उस डायरेक्शन में चलती है और जब हम फोर्स लगाना बंद कर देते हैं तो बुक रुक जाती है. मीन्स उस पर जो हम मोशन करा रहे हैं जिस डायरेक्शन में उसके अपोजिट डायरेक्शन में बुक के ऊपर कोई फोर्स लग रही है जो उस मोशन को अपोज कर रही है. ओके, this force is called as a friction force. The force which is acting opposite to the direction of motion is known as the frictional force. So that is being explained with the help of this book which has been placed on a table is moved with the help of a force by applying on it in a particular direction. You have okay, so basically you have understood now what is friction. So now we will come back to the topic. Okay, so you saw that it if you apply the force along the left the friction act along the right. मीन्स कि अगर हम फ्रिक्शन फोर्स को देखना चाहते हैं तो अगर हम फोर्स जो है लेफ्ट में लगाते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स राइट में लगेगा. क्यों? द फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. इफ यू अप्लाई द फोर्स along the right the friction force act along the left. In both the cases the forces opposes the motion of the book. दोनों ही केस में जो फ्रिक्शन फोर्स है वो मोशन को अपोज कर रही है. किसके मोशन को? बुक के मोशन को. ओके, सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द अप्लाइड फोर्स. जो फ्रिक्शन फोर्स होती है वो हमेशा अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन को ओके जिस डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स है और जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसको अपोज करती है.
In the above activity, the force of friction acts between the surface of the book and the surface of the table. जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है बेटा वो हमेशा एक्ट करता है जो दो सरफेस कांटेक्ट में होते हैं. So the force of friction always opposes the applied force and it acts between the two surfaces which are in contact with each other. Is the friction the same for all the surfaces? Does it depend on the smoothness of the surfaces? Let us find out. क्या फ्रिक्शन फोर्स हर सरफेस के लिए सेम होता है या फिर ये फ्रिक्शन फोर्स सरफेस की स्मूथनेस और रफनेस पे डिपेंड करता है? Yes, it depends upon the smoothness of the surface. So let us see with an activity. Factors affecting the friction. Tie a string around a brick. एक कोई भी एक पत्थर को या एक ईंट को, दैट इज अ ब्रिक एज बीन शोन इन द फिगर, उसको आप एक स्ट्रिंग से बांध लीजिए. ओके, पुल द ब्रिक बाय अ स्प्रिंग बैलेंस as shown in the figure 12.3. You need to apply some force. Note down that the reading on the spring balance when the brick is just begin to move. जब वो ब्रिक फोर्स अप्लाई होने के बाद बस मूव करना चालू करे उस टाइम आप स्प्रिंग बैलेंस में देखिए कि क्या रीडिंग है. ओके, इट गिव्स यू द मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ द ब्रिक एंड द फ्लोर. वो जो स्प्रिंग बैलेंस पे रीडिंग होगी वो आपको बताएगी कि surface of floor and the surface of the brick, what friction is there. Okay, so now what is spring balance? Spring balance is a device used for measuring the force acting on an object. स्प्रिंग बैलेंस वो डिवाइस है जो यूज किया जाता है मेजर करने के लिए कि कितनी फोर्स एक ऑब्जेक्ट पर लग रही है. इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल्ड स्प्रिंग which get stretched when a force being applied to it. Stretching of the spring is measured by the pointer moving on a graduated scale. Means स्प्रिंग बैलेंस वो डिवाइस है जिससे हम मेजर कर पाते हैं कि कितनी फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लग रही है, जिसके अंदर एक स्प्रिंग होती है और जैसे जैसे वो स्प्रिंग मूव करती है तो उसके ऊपर एक स्केल होता है जिसपे वो मूवमेंट पे स्केल पे रीडिंग शो करता है और वो रीडिंग ही आपको बताती है कि कितनी फोर्स है और कितना मैग्नीट्यूड फोर्स का है या कितनी वैल्यू फोर्स की है. द रीडिंग ऑन द स्केल गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स. नाउ हियर यू कैन सी दैट two students are there and what they are doing, they have a pencil cell. Okay, and they place that pencil cell on the inclined plane as been marked at point A and then leave it. It will go on the table to certain point, okay, as in the figure A. Now they have changed the surface, means on the table they have placed some sheet whose roughness is more as compared to the table. Now again they put the cell on the same height at marked at A. Now you can see that the cell is not moved the same distance. The distance of the movement of the cell on the surface is now changed, though it has been released from the same height. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पेंसिल सेल हर दोनों केस में जब सरफेस अलग अलग था तो दोनों केस में उसकी जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ है सेम पॉइंट पे रिलीज करने से वो अलग अलग हुआ है. इसका मतलब कि जो फ्रिक्शन है वो रफनेस या फिर स्मूथनेस ऑफ अ सरफेस पे डिपेंड करता है. सो द पेंसिल सेल कवर डिफरेंट डिस्टेंसेस ऑन डिफरेंट surfaces. Does the distance covered depend upon the nature of the surface on which the cell moved? Yes. Could the smoothness of the surface of the cell also affect the distance traveled by it? Yes. If we cover the cell with the help of a sandpaper, which is a rough, okay. So if we, I shall try the activity by wrapping a piece of sandpaper around the cell. Friction is caused by the irregularities on the two surfaces in contact. Even those surfaces which appear very smooth have a large, okay, or minute irregularities on them. The irregularities on the two surfaces lock into one another. When we attempt to move any surface, we have to apply a force to overcome interlocking.
तो जो दो सरफेस के बीच में रफनेस होती है, तो कोई सरफेस अगर देखने में स्मूथ भी लग रहा है तो उसके अंदर बहुत सारी रफ एरियाज हैं। और जब दो सरफेस एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो रफ सरफेसेस होते हैं ये आपस में इंटरलॉक करते हैं, जिसकी वजह से फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होती है। ऑन रफ सरफेसेस देयर आर, okay, a larger number of irregularities, so the force of friction is greater if the roughness of the surface is greater, or roughness of the surface is there. So here in the figure, the irregularities or the roughness of the surface has been shown, which is on the table, which is looked to be smooth but it is not smooth. You can contact on the mentioned number on your screen for admission in Rasa International School from class playgroup to class ninth. Thank you.